one of the toughest experiences to go through in life is a heartbreak. When a heartbreak happens, you experience this deep sense of pain, the pain of being separated from a person who was your go to for everything. This was the person with whom you had your ups and downs of life, you shared happiness and sorrows, you traveled together, you made best of your memories, and now suddenly this person is out of your life. So, what you're left with now is this big void which is filled with lots and lots of pain. Think of it as a bag of pain, and that is what you're left with after this person is out of your life. And this pain and this heartbreak is completely sinking you down. If you are going through a heartbreak right now, I'm here to tell you that all the feelings that you're feeling in this moment are 100% valid. Whether you're feeling this intense sense of anger, frustration, resentment, bitterness, or you're feeling guilt or shame, or you're thinking this could have been better or that, whatever you're thinking at this moment, whatever you're feeling in your heart, all of that is valid. I completely understand what you're going through. And today I am going to be talking to you through this video, not only in my capacity as an emotional intelligence coach, but also as a girl who has been through a massive heartbreak herself. All that I'm going to be sharing with you today, just think of me as your friend or as your sister who is here to acknowledge your pain and is here to help you walk through that pain. There are largely two ways to deal with pain. The first one is avoiding the pain, and the second one is facing the pain. Let's talk about the first one because it is the most common practice that a lot of us do. So when a heartbreak happens, when we are left with that big bag of pain that is weighing us down, what we do is we avoid the pain because the pain is so big, it is very difficult for us to engage with it, to face it, to be in it. So what we start to do is we start creating a parallel life for ourselves. We start getting busy in life with multiple distractions. तो जब हम डिस्ट्रैक्शंस के साथ अपने आप को एंगेज करने लगते हैं, हमारा माइंड इस पेन से हट जाता है और हम दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं. तो हमें लगता है कि शायद हम ब्रेकअप से या उस हार्ट ब्रेक से आगे निकल गए हैं. जब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में बिजी करते हो, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस दैट पीपल यूजुअली एंगेज इन. फर्स्ट इज अ नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन. द नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन कैसी दिखती है? Negative distraction is like you could be getting into a next relationship, a rebound relationship, could be engaging in one night stands or too much of sex, or you're getting into addiction. It could be alcohol, it could be any other substance, it could be even friendships. Those are not serving you, but you're just hanging out with these people because you don't want to spend time with yourself because it is too painful. These are negative distractions. ये तो definitely बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक हैं ही, but there's another kind of distraction जिसमें लोग चले जाते हैं, that is positive distractions. अब positive distractions कैसी दिखती हैं? Positive distractions में mostly जैसे लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं एक रिवेंज बॉडी बनाने के लिए या प्रूव करने के लिए कि आई एम वर्दी. बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा सोशल होना शुरू कर देते हैं, कोई हॉबी बना लेते हैं. ऑल ऑफ दिस इज your positive distractions. ये दिखने में बहुत अच्छी लगती है. It looks like that you're moving on with life, you've got it all going, you're getting more fitter, you're getting control of your life. But this is also a distraction at this moment because you have pushed your pain at the back of your mind. You know, let me simplify it. तो जैसे suppose कीजिए कि this hand of mine, this palm is your foundation of life, is the foundation of your emotional well-being. ठीक है, जब आपका हार्ट ब्रेक होता है तो यू हैव अ लॉट ऑफ पेन, जो यहाँ से फाउंडेशन के ऊपर बहुत सारा पेन आ गया है. व्हेन यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग यू फील द पेन, व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क यू फील द पेन, व्हेन यू आर डूइंग सर्टेन एक्सपीरियंसेस, यू नो, यू आर गोइंग आउट टू योर फेवरेट रेस्टोरेंट टू ईट, यू आर गोइंग आउट ऑन द सेम रोड्स दैट यू यूज्ड टू ड्राइव अराउंड. ऑल ऑफ दिस इज ब्रिंगिंग द मेमोरी ऑफ दैट पर्सन एंड इट्स कॉजिंग यू पेन. सो right above your foundation exists now a lot of pain. What we do when we want to avoid that pain is we want to push it down. ये सारा पेन जो हमारी लाइफ के हर एरिया में फैल रहा है, हम इसको इकट्ठा करके इसको नीचे दबाना शुरू कर देते हैं. And when we push it down, then what happens is this becomes my new foundation of emotional state. All of that exists between my old emotional state and my new emotional state is that pain. On this new foundation, I start getting engaged into distractions, चाहे वो negative distractions हो या positive distractions हो जिनकी मैंने बात की. अब इन दोनों तरह की distractions में problem क्या है कि जैसे ही आपका ये pain जो इस लेयर के बीच में है, जैसे ही इस पेन को कोई ट्रिगर मिलेगा, the moment you will be hurt in the same way again, this pain will again erupt out. जब ये erupt होगा तो आपकी ये फाउंडेशन हिल जाएगी.
तो जो भी आप पॉजिटिव चीज़ें भी कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, हॉबीज पिक कर रहे हैं, इवन दैट विल नॉट बी अ परमानेंट सोल्यूशन. सब कुछ हिलने लगेगा. सो ऑल ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस आर गोइंग टू बी अ वेरी टेम्पररी फिक्स. So is it wrong for you to engage into these distractions to avoid your pain? I don't think so. Because sometimes that pain is so huge that our best option is to just unsee it, just not face it and move on with our life. It's okay to engage into distractions, not the negative ones, but probably the positive ones for the time being. But always, always, always remember that this is a temporary solution. This is not a permanent solution. So फिर permanent solution है क्या? That brings me to my second point, which is facing your pain. How do you face your pain? How do you confront your pain? You confront your pain by processing it. How do you process your pain? You process your pain in 2 steps. First is feeling it. Avoid करने की जगह अपने पेन को feel करना है. Feel करना कैसा दिखता है? फील करना आपके पेन को ऐसा दिखता है कि यू स्टार्ट फीलिंग एंगर टुवर्ड्स द पर्सन, यू स्टार्ट ब्लेमिंग देम, यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, यू स्टार्ट पिटिंग योरसेल्फ दैट समथिंग नेगेटिव द अदर पर्सन हैज डन टू यू, दे वर सो बैड, दे वर सो मीन, और you start going towards the next side of emotion, which is guilt and shame, that oh, I was so bad to them, maybe I should have not done that, maybe it would have worked out in that way. All of these things you're feeling, all of these feelings are making you get connected to the pain that the heartbreak has left you with. So this is your feeling the pain. So ये सारी feelings जो आ रही हैं, चाहे वो उनको blame करने, उनकी तरफ गुस्सा है, या चाहे अपनी तरफ blame है, guilt है, या अपनी तरफ गुस्सा है, all of these are valid feelings because you are getting the hang of your pain. You are interacting, you are talking to your pain, you are letting it touch you. आप उसको avoid करके कहीं side पे निकाल नहीं रहे हो, आप उसको अपने आप को touch करने दे रहे हो. It is okay to feel every feeling. दिस इज फर्स्ट स्टेप. यहाँ पर अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप दूसरे इंसान के लिए, उस इंसान के लिए बहुत बिटर हो जाते हो, बहुत नेगेटिव हो जाते हो, टाइम बीइंग के लिए इट इज़ ओके टू फील दैट वे, बिकॉज मूविंग ऑन में कभी कभी कुछ इस तरह की फीलिंग्स हमें इन अ पॉजिटिव वे हेल्प करती हैं. लेकिन लंबे समय तक ऐसा सोचना उनके बारे में या अपने बारे में नेगेटिव सोचना इज नॉट द राइट थिंग. दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ हीलिंग. Now that you've felt the pain, you have expressed your emotions, whether they are of anger or whether they are of upsetness or they are of guilt and shame, all of that you have expressed, you have felt. The second step is healing. So now when you are facing your pain, first step is feeling your pain. तो इस pain को आपने feel कर लिया, engage कर लिया, इससे बात कर ली, इस पेन ने जो आपको फील कराना था वो सब आपको फील करा लिया, चाहे वो एंगर था, चाहे वो गिल्ट था, चाहे वो रिजेंटमेंट थी, बिटरनेस थी, कंप्लेंट्स थी, ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हीलिंग. नाउ हीलिंग कैसी दिखती है लाइफ में? हीलिंग का सबसे पहला स्टेप है टू एक्सेप्ट दैट दैट पर्सन इज गॉन आउट ऑफ योर लाइफ. That person is gone and is gone for good, and it is okay, you are okay. The second thing that comes is forgiveness. Forgiveness for yourself and forgiveness to them. Even if the other person has caused you or betrayed you in some really offensive manners, और आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर दी या उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं, हीलिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है forgiveness. माफ़ कीजिए उनको भी और अपने आप को भी. For us sometimes it's very easy to forgive the other person, लेकिन जब अपनी बात होती है हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते. और जब हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते तो हम कैसी चीज़ें करने लगते हैं? हम ऐसी बातें बोलने लगते हैं कि रिलेशनशिप्स तो होती ही बेकार हैं, लव शव कुछ नहीं होता है, ये तो बकवास चीज़ है, अरे मुझे तो नेक्स्ट कभी प्यार में पड़ना ही नहीं है, ये तो टाइम वेस्ट होता है. इस तरह की बातें आप तभी करते हैं जब आप इतने डीपली हर्ट होते हैं कि आपका प्यार से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद को भी माफ़ नहीं कर रहे होते हो एक शायद गलत इंसान को चूज करने के लिए. प्रैक्टिस forgiveness. Learn to forgive them for all the hurt and pain they have caused you, and learn to forgive yourself for all the pain that you have gone through or all the wrong that you have done, or if you think that you chose a wrong person. इन सभी reasons के लिए अपने आप को forgive करें. जब आप खुद को forgive नहीं करते हो तो आप एक बहुत ही गलत belief system बनाने लगते हो. वो गलत belief system क्या होता है? You start feeling love is bad, love is painful, love hurts, love is a waste of time. प्यार व्यार तो किन्हीं और लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है. आई एम नॉट मेंट फॉर लव. या आप प्यार से दूर भागने लगते हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हो इस तरीके से कि आप लव के आइडिया को रिजेक्ट करने लगते हो.
that is not the right way. That means you have not healed. क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप कैसी फ्रीक्वेंसी एक्सूट कर रहे हो? आप ऐसी फ्रीक्वेंसी एक्सूट कर रहे हो जहां पे आप लव को रिजेक्ट कर रहे हो. एंड व्हेन यू रिजेक्ट द आइडिया ऑफ लव, देन the right person for you does not come in your life. अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है, आप में से कुछ लोग जिनके ब्रेकअप को कुछ टाइम हो गया है और जिन्होंने खुद को स्ट्रांग बनाने के नाम पर ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि प्यार व्यार बकवास होता है, आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ, आई विल फोकस ऑन माई करियर, आई विल फोकस ऑन माई इंडिपेंडेंस एंड ऑल ऑफ दैट, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम विद लव. 1 मिनट के लिए पॉज लीजिए, सोच के देखिए आंखें बंद करके, रियलिटी चेक लीजिए एक बार. इज द राइट लव कमिंग इन योर लाइफ? एंड इफ नॉट, चाहे आप नहीं चाहते हैं लव का आना, बट आर यू हैप्पी विद दैट फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग लव इन योर लाइफ? एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द लव दैट कम्स फ्रॉम अ पार्टनर. आप सब लोगों के लिए ऐसे हो जाते हैं. आप फ्रेंडशिप्स में भी थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं बिकॉज आपको लगता है ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है. तो आप एक ऐसे तरह के पर्सन हो जाते हैं जो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है वेयर द रियल लव, whether it's coming from a friend or a lover, that real love is not coming to you or will not come to you because you are not at the same frequency of receiving love. You are rejecting love. So जब आप heal करते हैं, जब आप truly heal करते हैं, then you don't form any of these wrong notions about love. Then you start feeling all the more grateful that you have gone through a bad experience, but in your life you are now open to the idea of love. I'm not saying that you get into a relationship or you do whatever. I'm just saying that make this room for love in your life. Do not let your hurt, do not let your pain shrink this room completely or make this vanish completely. There is always, always, always a room for love in life. I can completely understand if you have just gone through a heartbreak, if it is too fresh for you right now, understanding all of this can become very difficult. And I am here to acknowledge that also. इफ़ यू आर फीलिंग कि बड़ी डिफिकल्ट लग रहा है ये सुनने में और ऐसा थोड़ी होगा मेरे साथ, मुझे तो नहीं पसंद है लव का आइडिया, ये तो बकवास की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा फील कर रहे हो. इट इज़ ओके टू फील दैट एट दिस मोमेंट, बट इन अ लॉन्ग टर्म जब इस पेन से आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, आई वॉन्ट यू टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन दिस इंस्टेंस एंड जस्ट क्रिएट अ बिग रूम इन योर हार्ट फॉर लव. आई नो हमने ये वीडियो आज शुरू की थी हार्ट ब्रेक के पेन के साथ, and towards the end of this video I just want to tell you that healing का सबसे important part है forgiveness, and forgiveness का सबसे important test है या पता कैसे चलेगा that you have really forgiven them and yourself is when you really know that there is a big room in your heart for love. I'm not saying next relationship, I'm not saying next lover, I'm just saying room for love, where you can feel love, where you are not becoming insensitive to the idea of love. That is when you know that you have really forgiven. वो ऊपर वाला forgiveness नहीं कि हाँ ठीक है इसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने माफ किया. जब हम 4 दोस्तों के साथ बैठ के इस बारे में बात करते तो हाँ ठीक है यार, I've forgotten him, he was a loser, whatever, I've forgiven. वो वाला forgiveness नहीं. Actual real forgiveness, which means that you wish them well and for yourself you make a big room in your heart for love. I really, really hope that whatever I have shared in this video is of some use to you, will help you to navigate through the intense pain that you're going through right now. Once again, towards the end of this video, I just want to tell you that I completely understand all that you're feeling. Just know that all your feelings are valid. Don't think you are a bad person for thinking bad about somebody or for complaining too much. It is okay, but do that for a temporary, while. Do that for just a time being. Don't just keep living in it. कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ब्रेकअप को 2 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब उनके एक्स का नाम आता है तो वो इतने ज़्यादा उनके अंदर इमोशनल इरप्शन होने लगता है, इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं, एंड दैट इज़ नॉट हेल्दी. Whatever the other person has caused you, I know it is easier said than done. I know it's tough to understand, but trust me, there is forgiveness for everything, and there is a room for love at every stage in your life. Just make that consciously for yourself. Jate jate, I would just like to tell you that I have a podcast called The Journey Within Podcast, where we talk about understanding our inner world, where we process our thoughts, feelings, emotions, and life events such as a heartbreak. इन सबको हम कैसे बेटर तरीके से प्रोसेस करें, अपने इमोशंस को कैसे मास्टर करें, क्योंकि इमोशंस और हमारा मन जो है ना, ये हमको बहुत
मुश्किल में डाल सकता है अगर हम इसको ढंग से रेगुलेट ना करें. So through this podcast, my honest attempt is that you understand to regulate your emotions better. You get a grip on your emotions rather than just getting swayed in the negative stream of emotions. If you've liked the idea, do check out my podcast. It is on the link above, here or here, wherever. I'll also link it in the description box. Thank you so much for watching this video. Do subscribe to the channel, because when you subscribe, YouTube algorithms know that this channel is doing some good work that is subscribed, liked, shared and commented by the people. So it starts spreading our message to other people also. So please do support me in this journey, and I'll see you in my next video. I wish you lots and lots and lots of love, and I am really hopeful that all that you're going through right now, all the pain that you're dealing with right now, it will soon be better. Take care of yourself. I'll see you in the next episode. Bye.